सो स्टार्ट फर्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे इसको ना जब भी मैं फॉर्मूला को लिखूंगा यू हैव टू राइट डाउन इन द कॉपी ठीक है यू हैव टू राइट डाउन योर कॉपी एंड जस्ट ट्राई टू memorize this formula kinetics the half life what is the half life formula in general half life formula immediately copy में लिख लो t half this half life formula in general I'm talking about the half life is the in general way 2 to the power n minus 1 I'm kn into a0 to the power a0 to the power n minus 1 into n minus 1 right where n is basically your order if you have to remember order of the reaction and a0 is your initial concentration right and also this from this equation because see only changeable quantity is a0 or you can write down not the because that's not the changeable quantity there's a fixed quantity so t half the half life is inversely proportional to your a0 to the power n minus 1 so you have to remember this formula next let's say मैं एक color change कर देता हूँ let's say if you have some kind of reaction like carbon solid and you have this let's say carbon dioxide gas ठीक है तो ये अगर react करेगा तो definitely you are going to get 2 mole of carbon monoxide that is also gas now equilibrium constant कैसे हम लोग define कर सकते हैं kp because you need to take your gaseous element only not your solid element right so then the equation will be your PCO product this product by reactant तो product में क्या है you have this 2 तो 2 हो जाएगा square and pressure of this gaseous we're going to take only the gaseous element and you have this PCO2 now this is the partial pressure of this total reaction what is the total pressure let's say total pressure is basically your P, then the partial pressure of CO, that will be the mole fraction CO X. This is actually X. देखने में काई लग रहा है, right? Okay, X CO into your total pressure P. Similarly, you can write down PCO2 because sometime ना जब भी हम लोग ऐसे कोई रिएक्शन दे देते हैं टोटल प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट टोटल प्रेशर यहाँ पे मेंशन किया जाता है ओके XCO2 you can easily calculate from this equation XCO2 let's say XCO that is basically your NCO by total NT means total mole number right so definitely you can solve this not a big deal हम लोग mole fraction that is your X mole fraction को हम लोग easily calculate कर सकते हैं and this is the P so if you can put this value CO का value इधर बिठा दो then you have this mole fraction CO whole square into total pressure whole square by you have this mole fraction CO2 into your P तो यहाँ पे PP को हम लोग कैंसिल कर देते तो PP गॉन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा P ठीक है ना उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दिस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB that is basically your KB into M this M is basically your molality this is the formula and this is basically your elevation of ये क्वेश्चन मेनली नेट में ज्यादा पूछा नहीं जाता है नेट और जैम में बहुत गेट और जैम में ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड देन एक बेसिक चीज मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल फॉर्मूलाज सो द गैस कांस्टेंट you know this gas constant R right so this R what is the value of R का 3 values होता है 3 values right 3 values one values is basically हम लोग 0.082 यूनिट क्या होगा लीटर एटीएम L लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रिमेंबर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कॉमन होता है 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse there is another one unit 1.987 that is basically your you can write down equal to 2 that is nearly equal to right
So you can write down nearly equal to, इसके यूनिट क्या होगा, कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है ना? Okay. So you know this general equation that your dH is basically your delta H, change of enthalpy, is basically your change of internal energy, plus del Ng RT, where this del Ng is basically your end product, total प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल होगा, माइनस एन रिएक्टेंट. देखो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट का जो मोल नंबर, मोल माइनस reactant का जो total mole number. There's another equation in thermodynamics, delta G is basically your delta H minus T delta S. क्लियर हो गया? ओके, तो ये सब फॉर्मूला को याद रखना है. किसी भी एक फॉर्मूला से, इस प्रीवियस स्लाइड में ना जो भी डिस्कस किया, रिमेंबर यहाँ से कोई भी एक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछाएगा, and that's 100% हाई चांस है. तो एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग दैट जब भी फिजिकल क्वेश्चन आएगा, द फर्स्ट, अगर वो क्वेश्चन ना, अगर कोई भी जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से आएगा, देन यू शुड रिमेंबर दैट पोर्शन. कोई भी क्वेश्चन जैसे नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना, नेट में नेट नहीं पूछा जाते, नेट, राइट? यू नो दिस नेट टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे नेट टाइप हो सकता है, दैट इज बेसिकली योर न्यूमेरिकल टाइप. यू कैन हैव योर मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, MSQ. नेट में ओनली MCQ पूछे जाते हैं, तो नेट में ये सब एप्लीकेबल नहीं है. बट गेट और जैम, यहाँ पे यू हैव योर मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, दैट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं. नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे वो रेंज होता है, राइट? कोई भी मैथ दिया जाएगा, उसका आंसर मान लेते हैं 1.98, तो उसका रेंज ऐसा रहता है 1.97 to 1.99. समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो डेफिनेटली जब भी मैथ, कोई भी फिजिकल क्वेश्चन अगर मैथ क्वेश्चन से पूछा जाएगा, कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पढ़ के ना यहाँ पे क्लिक करना है वो कौन सी फॉर्मूला से पूछा गया. अगर इफ यू कैन रिमेंबर दैट फॉर्मूला, देयर इज अ 90% चांस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द फिजिकल फॉर्मूला. एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस तो मैटर करता है. अगर किसी ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, देन अगर वो टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली आंसर कर सकता है. नेट का फिजिकल उतना डिफिकल्ट नहीं होता है. दिस इज जस्ट योर इंफॉर्मेशन. 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज बेसिकली योर 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. Again, in a molecular spectroscopy, we have discussed that how to convert your joule to your semi-inverse, how to convert Hz, that is equivalent to your second inverse. Second inverse means Hz, right? इसको हम लोग कैसे convert कर सकते हैं in semi inverse. तो जूल को, J means जूल, जूल को हम लोग कैसे सेमी इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे? जस्ट डिवाइडेड बाय योर HC. तो सेमी इनवर्स से कैसे हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई बाय HC, ठीक है. सेकेंड इनवर्स और हाफ से कैसे हम लोग सेमी इनवर्स पे कन्वर्ट करेंगे? जस्ट डिवाइडेड बाय C. सेमी इनवर्स से कैसे हम लोग हाफ और सेकेंड इनवर्स से कन्वर्ट करेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई विथ C. क्लियर हो गया? सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ यू कैन रिमेंबर द एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, कौन सी नंबर था यहाँ पे? 4. उसके बाद मान लेते हैं 5 है. For your adiabatic process, let's say for your adiabatic process, ठीक है, for your adiabatic process, you know this equation, PV gamma is basically your K. PV gamma is basically your K. And also you know this equation, if you know this PV gamma, gamma is basically your Cp by Cv, right? And then there is another term, temperature with volume, TV gamma minus 1, that will be constant. देखो ideal gas, normal क्या होता है ना, isothermal ideal gas का equation P1V1 equal to P2V2. But if you have an adiabatic process, then PV gamma equal to K, and also TV gamma minus 1 equal to K, constant. K means constant.
and also you can write down T gamma into P 1 minus gamma, also your constant. ये कांस्टेंट का मतलब क्या है? दैट मीन्स ये जो इक्वेशन में लिखा है इसको वैसे भी लिख सकते हो अगर दो कंडीशन एप्लीकेबल है, जैसे T1 T2 P1 V2, देन यू कैन राइट डाउन T1 V1 gamma minus 1 and that will give you T2 V2 gamma minus 1. ओके, ठीक है. दिस गामा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1.67 फॉर मोनो एटॉमिक and this will be your 1.4 for diatomic, that means oxygen, hydrogen, chlorine, ठीक है, for this kind of system. And next formula that can be your quantum से हम लोग कर सकते हैं ना, energy of particle in 3-dimension box, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, energy of particles in 3-dimension box, 3D box, right? That means for 3 dimension you can use nx, ny, nz. So this value will be your nx square, ny square, nz square. That is basically h square by 8 ml square. Okay. Next equation will be your Debye-Hückel theory, right? You know this using your Debye-Hückel theory. Debye-Hückel theory. That formula क्या था? Log gamma plus minus, that will be minus a z plus z minus root over I. So this gamma plus minus इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Mean ionic activity coefficient, right? This is your mean ionic activity coefficient. ठीक है, ये जेड प्लस जेड माइनस ये सब होता है चार्ज. ठीक है, ये सब चार्ज है. ए का वैल्यू क्या होता है? माइनस ए का वैल्यू क्या होता है? 0.509, राइट? ये सब कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, क्लियर हो गया? ऑलराइट. उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट देखो और क्या फॉर्मूला होगा. उसके बाद यू हैव 8 नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो, पीवी गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एन आर टी. ये तो बहुत सिंपल गैस इक्वेशन है, बट इसको हम लोग थोड़ा प्ले करेंगे. प्ले मीन्स ये जो एन है ना, दिस इज योर मोल नंबर, तो मोल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मोल नंबर को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, W बाई एम. वाई? बिकॉज W इसके यूनिट क्या है? ग्राम वेट. एंड दिस एम मोलिकुलर वेट, दिस इज बेसिकली इसकी यूनिट क्या है? ग्राम मोल इनवर्स. तो ग्राम ग्राम गॉन हो जाएगा, तो W बाई एम का तो ओवरऑल यूनिट मोल हो जाएगा ना. मोल इनवर्स नीचे है तो ऊपर जाएगा. So that's why W by M is basically N. Now PV is basically W by M. If I can write PM, that will give you W by V RT. So weight by volume, that will give you density, right? So density, that is rho W by M. So that is the rho RT. Okay. What is the unit? ग्राम. सॉरी यहाँ पे V होना चाहिए, W/V, ग्राम पर वॉल्यूम. सो यू कैन राइट डाउन लीटर इनवर्स. ओके, क्लियर हो गया? ओके, 9 नंबर पे हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? वी कैन राइट डाउन द नेक्स्ट फॉर्मूला, चेंज ऑफ एंट्रोपी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट. ठीक है ना? चेंज ऑफ एंट्रोपी, ये क्वेश्चन मेनली योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा जाता है.
डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी, एस मींस एंट्रोपी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो सब कुछ तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग शॉर्ट डिस्कशन कर रहे थे, एवरीथिंग आई कैन नॉट मेंशन हियर। चेंज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, चेंज ऑफ एंट्रोपी दैट विल बी योर एन एफ, एक सेकेंड, ओके, NF, and then you have dE by dt at constant P, NF dE by dt at constant P। now ये जो F है ये तो फैराडे कांस्टेंट है, F का वैल्यू पता है ना, कूलॉम मोल इनवर्स होता है इसका यूनिट, ओके। ये जो टर्म है, ठीक है ना, दैट इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट, डी बाई डी टी एट कांस्टेंट पी। रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, व्हाट इज द यूनिट, वोल्ट केल्विन इनवर्स। अभी हम लोग एफ का वैल्यू डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी देर में एफ का वैल्यू भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला इज योर चेंज ऑफ एंट्रोपी, बिकॉज वी आर टॉकिंग चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर एनी योर रिवर्सिबल प्रोसेस for different state for temperature volume। तो देखो, if you can remember this formula we've discussed in your thermodynamics classes, that delta S is basically your NCV, right, NCV ln T2 by T1। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबी को हम लोग इजीली गैस के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर मोनोएटॉमिक डायटोमिक वी हैव डिस्कस एवरीथिंग, राइट। सीबी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीबी जब रहेगा ln T2 by T1 प्लस NR, N is the mole number, and then you have this ln your V2 by V1, same delta S we can write down in the form of Cp, so NCP ln T2 by T1 minus NR ln P2 by P1। so you have to remember whenever you so there is a simple tricks, जब भी हम लोग CB यूज करेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा बट ये साइन प्लस रहेगा, जब भी हम लोग प्रेशर यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा बट साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, कंफ्यूजन कब होता है, जब सब कुछ पढ़ लेते हो ना, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कुछ पढ़ लोगे ना, यू नो द सिलेबस, so let's say I don't know, this is जैम सिलेबस, तो ये काफी बड़ा होता है ना सिलेबस, जब सब कुछ पढ़ लोगे ना तो मजा आ जाएगा, भूलने लग जाओगे। तो इसलिए दैट्स वाई जब भी सब कुछ पढ़ लोगे ना तो ये सिंपल ट्रिक्स काम में आते हैं, उसके पहले नहीं आएगा। जब कोई भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो सब कुछ कर लोगे, जब सब कुछ पढ़ लोगे तो भूलने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज दैट your criteria for spontaneous process, right। यहाँ पे 4 क्राइटेरिया है, रिमेंबर ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर नेट, गेट और IIT-JAM के लिए 1 मार्क्स। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर spontaneity or spontaneous process, both are same। so this condition is basically your delta G, change of gas free energy, that is less than equal 0, but the constant quantity is T and pressure। देखो ये जो नीचे जो है that is the constant quantity, constant temperature, pressure, that is your less than equal 0। delta S, change of entropy, that is more than 0, spontaneous process, irreversible process, entropy will be more than 0, right, positive entropy increase हो जाता है, but in delta S this quantity will be your UV, greater than equal 0। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जब करेंगे तो एंट्रोपी एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है एस वी, बट दैट इज योर लेस देन इक्वल 0। एंड ऑल्सो यू हैव दिस डेल्टा एज इज बेसिकली योर एस पी, दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल 0, ठीक है।
ओके उसके बाद देखो 12 नंबर पे कौन सा इक्वेशन आएगा। आई होप सबको याद है ये सब फॉर्मूला जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर याद नहीं है तो अभी अभी जाके जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करके इसको याद कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द कार्सब इक्वेशन? Anyone, can you remember this Karsab equation? You can calculate this change of your enthalpy with the help of your delta Cp, and you have this T2 minus T1. So ये equation. So similar, okay, you can calculate this value. Can you remember the Nernst equation in electrochemistry? Nernst equation. You think that we are, I don't 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Nernst equation. E is basically your E0 minus 0.0591 by N, right? N is that electron is involved in this process, right? And you can write down in the product, in the right side, product concentration by your reactant. This E0, that is, E0 is basically your E0 right hand electrode minus E0 लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। राइट हैंड इलेक्ट्रोड में कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। रिमेंबर, लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन। अगर मैं किसी भी पोजीशन में गलत कर दिया ना तो मैसेज सेक्शन जो है, चैट सेक्शन में इमीडिएटली रिप्लाई करने कि सर आपने ये गलत बोल दिया। हो भी सकता है ना, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। सब कुछ पढ़ के मैं जब क्लास लेने आता हूँ मैं ही भूल जाता हूँ। मेरे साथ भी कई बार हुआ। ओके नेक्स्ट 14। ओके और एक इक्वेशन था इसमें। दिस इज नॉट द नॉन्स्ट इक्वेशन। डेल्टा जी नॉन्स्ट इक्वेशन तो ये है। डेल्टा जी इज बेसिकली डेल्टा जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू इज बेसिकली रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज योर absorbance that is your A, right? This absorbance is basically your log I0 by I, intensity of the incoming light I0। इंटेंसिटी मतलब इनकमिंग लाइट का I0 होता है, जो बाहर की तरफ जाता है ना emitting light, that intensity is I scatter, transmittance part। Then you can write down the transmittance form. The equation is basically epsilon Cl, where this I by I0, that is your transmittance, right? T को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेंस। Now the important part is this molar extension coefficient. Epsilon is basically extension coefficient, molar extension coefficient. So what is the unit that you have to remember? Decimeter cube, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको ना जितना ज्यादा हो सके ना कॉपी में प्रैक्टिस करना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम हॉल में। C is basically the concentration, the unit is mole per liter, liter basically your mole per liter, so decimeter cube per cube, and this L, this length, path length, because you have a semi part, so that is your semi, but A, the absorbance is your unitless quantity, right? This is your unitless quantity, so you have to be very careful. So you can write down this formula with your transmitters form। transmitters को हम लोग T से डिनोट करते हैं। so A is basically और माइनस कर देते और I0 I का पोजीशन चेंज कर देते, ठीक है ना। I0 I का पोजीशन हम लोग एक्सचेंज कर देते। so now you have a minus log I by I0, that means minus log T, ठीक है, माइनस log T। so this absorbance is basically minus log T, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो 15 में क्या है। योर सॉलिड स्टेट में हमने डिस्कस किया था इंटर प्लानर डिस्टेंस, योर D सफिक्स में HKL, राइट? रिमेंबर
दिस इंटरप्लानर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? इंटरप्लानर डिस्टेंस, that is your DHKL. So this DHKL you can write down 1 by your DHKL whole square, that will give you h square by a square plus k square by b square, and this HKL, so L square by c square. So that's the corresponding axis and their length, AHKL square by c square. Okay, so that's the equation. And you have this orthorhombic, right, different cases है जहाँ पे हम लोग का वैल्यू चेंज हो जाते हैं. तो ये बेसिकली ऑर्थोरोम्बिक के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक, रिमेंबर राइट, वी हैव दिस एवरीथिंग आई कैन नॉट राइट डाउन हियर, जस्ट एक सिंपल मैं ऑर्थोरोम्बिक यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. ऑर्थोरोम्बिक, एक बार चेक कर रहे यार, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए क्या था? A not equal, B not equal C, and this angle alpha, beta, gamma, that is your 90 degree, right? Okay, next क्या फॉर्मूला है? Let me check. उसके बाद कौन सा फॉर्मूला है? Okay, next जो फॉर्मूला है, that is your, we have discussed your molecular spectroscopy. Now, what is the spacing between two rotational line, right? So I can write down spacing your between two rotational lines. Between the two rotational line is basically your 2b. Remember, centimeter inverse. Now this b is rotational constant. b को हम लोग क्या बोलते हैं? Rotational constant. Okay. Now ये जो rotational constant है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? h card by 4 pi IC. h card by 4 pi IC. So h card is basically h by 2 pi. h card h by 2 pi. So you can write down h by 2 pi. 2 pi करोगे तो 8 pi square IC. The moment of inertia I is basically your mu r square. This mu is basically your reduced mass, right? If you can change the isotope, we have discussed everything, right? If you can change the isotope, then ये reduced mass change हो जाता है. So वही reduced mass के साथ B का inversely relation होता है. So B is inversely proportional to your mu. So if you can vary the isotope, that will affect the rotation constant value, and definitely that will affect your line difference. Okay. Also, the next is your Arrhenius equation. What is your Arrhenius equation? Remember, 17. What is your Arrhenius equation? In Arrhenius equation, basically the rate constant K, that's really important. Rate constant K is basically your A into e to the power minus your activation energy barrier, EA, that is activation energy, right? This is the activation energy. And you have the R, that is your gas constant temperature, right? So then you have this equation. So if you want to multiply with ln, because you have this exponential term, so just multiply with ln. Okay, नीचे e है ना, तो ln k, that will give you ln a, ठीक है, ln a, and EA basically E cancel out हो जाएगा, तो minus EA by RT. I hope everyone knows this part. Then if you take a two condition, जैसे rate constant in two temperature, right? Because देखो ये rate, ये तो constant है, A is a constant. For same reaction, if you can take a two different condition, RB constant है, if you can vary this temperature, this rate constant will vary, will change. तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कैसे चेंज कर सकते हैं? देन दिस इक्वेशन विल बी योर ln k2 by q1. In let's say temperature is T1, corresponding rate constant K1,
temperature is T2 and you have this K2, and remember T2 is greater than T1. The 2 means higher term, T1 means relatively lower in comparison to 1. So you have this K1 and this will give you, देखो ये तो माइनस कर रहे हो ना, तो ln a कैंसिल आउट हो जाएगा, and then you have this ये by r common हो जाएगा because that is a constant, and now you have this T2 minus T1 by T1 to 2. So this is a really important equation. यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है. If you know this temperature, so definitely you can solve this. You know K का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना? आई होप सबको क्लियर हो गया. नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे? द मिक्सिंग ऑफ योर एंट्रोपी, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. गेट में तो एक क्वेश्चन और जैम नेट ये सब में एक क्वेश्चन मोस्ट मतलब आएगा ही. What is the change of entropy or and gives free energy during your mixing? Change of entropy and gives free energy during mixing. So that is your delta S mix. Delta S mix formula क्या है? Minus NR, summation of xi ln xi. I know everyone knows this. Xi is the mole fraction. Ln xi, right? And we know this. Delta S is basically your delta G by T, right? तो यहाँ पे जस्ट मिक्स डाल दो. मिक्सिंग प्रोसेस के लिए मिक्सिंग ही तो होगा फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर. नाउ द सेम पार्ट यू कैन राइट डाउन. If you know the delta G mix, then you can calculate your delta G mix. The change of gives free energy during mixing process. That is the delta G mix. तो delta G mix क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे delta G mix means क्या होगा? टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो टेम्परेचर का मल्टीप्लाई कर दो, बट यहाँ पे एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा. क्लियर हो गया? NRT, ठीक है, इसको भी याद रखना, एक क्वेश्चन पूछाएगा. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द आरएनएस इक्वेशन, राइट, इन द प्रीवियस स्लाइड. नाउ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यू नो दिस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. First order kinetics. In first order kinetics, the rate constant K, this is the rate constant. K means rate constant. That is your 2.303 by time. T is the time, log. Because you're putting 2.303, that's why log. अगर 2.30 नहीं रहता तो ln means suffix में e रहेगा. So that is the initial concentration A0 by your A0 by AT. A0 by AT. Okay. And for this reaction, first order reaction, what is your half life? Remember the formula, half life formula, the T half, the half life. This is the formula. Half life क्या होगा? 0.693 by K. Right? And also we know the Arrhenius equation. K is basically A into e to the power minus EA by RT. Right? So what you can do, that यहाँ पे जो value है ना, from equation, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ. तो यहाँ पे ये इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग क्या मिल सकते हैं? फ्रॉम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सो बी केयरफुल. 2 और 3 के के जगह में ना, ये जो के है ना, के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ. सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3. ठीक है ना? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and equation number 2, right, from equation 2 and equation 3, I can write down that this, instead of K, you can write down 0.693 by T half
that is equal to your A into e to the power minus A by RT. Now in this case you can calculate the T half value if you know the other value, or you can you can calculate the this activation energy value as well. Okay, so this is the point you have to remember, this activation energy. Okay, okay. उसके बाद क्या है फॉर्मूला, लेट मी चेक. नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया. नेक्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैन डर वाल्स इक्वेशन. What is your Van der Waals equation? You know the P plus n square A by V square. P plus n square A by V square. V minus NB, that will give you nRT. ठीक है, दिस इज द वैन डर वाल्स इक्वेशन. ये जो टर्म होता है ना, ये जो पूरा जो टर्म है ना, फर्स्ट P प्लस, ये बेसिकली प्रेशर टर्म होता है, एंड V माइनस NB ये बेसिकली वॉल्यूम टर्म होता है. ठीक है ना. बट ये देखो, ये एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए इंटरनल प्रेशर. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर. इसका यूनिट है प्रेशर. ठीक है, इसको याद रखना. पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इज बेसिकली इंटरनल प्रेशर, सो यूनिट विल बी योर प्रेशर. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन इन काइनेटिक्स. यहाँ से भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है. फॉर consecutive reaction, right? For consecutive reaction, or you can write down for consecutive first order reaction. Consecutive first order reaction, to know this equation, A to B to C. So the rate constant K1, another rate constant K2. Okay, now when time is basically 0, so initial concentration of A will be A, and then you have a 0 0 because times of 0 है, तो A तो B में convert नहीं हुआ, B से C में भी convert नहीं हुआ. जब time is basically your T, then this concentration will be X, this will be Y, and this will be Z. A is basically your X plus Y plus Z. ठीक है. नाउ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. अगर एक्स का वैल्यू पूछा जाएगा तो द इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, और द एक्स इज बेसिकली योर, ओके, द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली योर A, that is your initial concentration. Okay, A, and if you know the K1 K2, K1 by K2 minus K1. Okay, ओके, जस्ट अ सेकेंड. ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये नेट में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस होता है, तो ये मेनली गेट में पूछा जाएगा. सो बी केयरफुल. ओके, एंड यू हैव दिस e टू द पावर माइनस K1T. ऐसा नहीं कि नेट में भी नहीं पूछा जाएगा, देयर इज अ हाई चांस नेट पे भी आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं. सो e टू द पावर माइनस K2T. ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं. This concentration, because this is intermediate state ना, B, A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, so what is the concentration of B at max? वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. So then you can calculate the concentration of B at maximum concentration. तो ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. So you can write down A, the initial concentration, into K2 by K1, K2 by K1. K2 is the final, second step का जो rate constant है. So be careful. K2 by K1 to the power K2 by K1 minus K2. Okay, and then what is the time for this maximum concentration? This time will be your ln K2 by K1, ln K2 by K1 by K2 minus K1. Similarly, you can write down ln K1 by K2, ln K1 by K2, that will give you
K1 माइनस K2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी याद रखना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन है, यू नो दिस इक्वेशन, हमने डिस्कस भी किए थे काफी सारे मैथ में। डेल्टा जी जीरो दैट इज बेसिकली योर माइनस आर टी एल एन, यू हैव दिस के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है ना, ओके, एक सेकेंड। Now this will be your minus NF E0 cell. So then you can write down this value. यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से just compare कर सकते हो, negative negative gone हो जाएगा, and definitely you have this ln K equilibrium, that will be your NF E0 cell by your RT. ऐसे भी कर सकते हो, where this E0 cell, that is basically E0 right माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस योर पार्टीशन फंक्शन, राइट? सो यू नो द पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, रोटेशन वाइब्रेशन पार्टीशन। सो यहाँ पे मैं एक पार्टीशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी ट्रांसलेशनल। द इक्वेशन इज बेसिकली योर 2 पाई mkt by h square to the power 2 pi mkt by h square to the power 3/2 into v volume. And you know this equation, the value Boltzmann constant kb, basically 1.38 into 10 to the power minus 23. What is the unit? Joule Kelvin inverse, right? This age Planck constant, what is the value? 6.626. Now एग्जाम में अगर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है तो देन वही वैल्यू को यूज करना। ठीक है, ये तो मैं लिखता हूँ, ये जनरल वैल्यू है, बट अगर एग्जाम में जैसे 6.626 को 6.3 के तौर 6.63, कभी कभी एग्जाम में ना यही वैल्यू को 6.63 ऐसे तौर पे देता है, तो देन यूज दिस वैल्यू, अदरवाइज एरर आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे तो एरर आ जाएगा। 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, so you have to remember that formula as well. And you know this 1 joule basically your 1 kg meter square second inverse mf force। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या हो सकता है? लैंगमुइर थ्योरी, रिमेंबर लैंगमुइर थ्योरी। अगर आप एक चीज देखोगे ना, कोई भी फॉर्मूला के साथ नेक्स्ट फॉर्मूला कोई लिंक नहीं है। मैं ऐसे करके इसको सेट किया कि कोई भी फॉर्मूला, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक का डिस्कस करें, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्वांटम का डिस्कस करें, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग एब्जॉर्प्शन का डिस्कस करें, तो एक दूसरे को लिंक नहीं रहेगा। दैट विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग, राइट? दैट विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, तो एक क्वेश्चन पार्टीशन फंक्शन से पूछा गया, एक क्वेश्चन क्वांटम से, एक क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से, एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से, देयर विल बी नो, दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसके बाद देखो लैंगमुइर थ्योरी। ठीक है ना, लैंगमुइर थ्योरी, यू नो दिस थीटा वैल्यू, राइट? दिस थीटा इज बेसिकली योर kp by 1 plus kp, and this kp by 1 plus kp, this is for your monoatomic dissociative adsorption. Remember monoatomic dissociative, अगर डायटोमिक होता है ना, मोनोएटोमिक का तो हम लोग डिसोसिएटिव नहीं कर सकते, एक एटम का क्या करोगे डिसोसिएटिव। अगर डायटोमिक होता है, जैसे हाइड्रोजन है, इसको अगर डिसोसिएटिव करोगे तो देन इसका इक्वेशन क्या बन जाता है? kp बाई 1 प्लस kp रूट ओवर kp। तो यहाँ पे यही है डिफरेंस। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, दिस इज फॉर योर मोनोएटोमिक। मोनोएटोमिक का कोई भी डिसोसिएशन नहीं पॉसिबल है, बॉन्ड एक ही बॉन्ड ही तो नहीं है, राइट? बट if you have this equation where root over you are using, that means this is for dissociative diatomic molecule। देखो dissociative मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे देन ओनली यू हैव दिस रूट आता है एडसॉर्प्शन में, ठीक है, आधा आधा आ जाता है। तो डिसोसिएटिव,
अगर कोई भी क्वेश्चन में डिसोसिएटिव मेंशन नहीं है, बट मॉलिक्यूल लाइक इंस्टेड ऑफ डिसोसिएटिव अगर कुछ ऐसा मेंशन किया गया है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है बट नॉन डिसोसिएटिव, रिमेंबर द टर्म, अगर कोई भी नॉन डिसोसिएटिव मेंशन किया गया है बट स्टिल क्वेश्चन में डायटोमिक मेंशन किया गया है, देन यू नीड टू यूज इक्वेशन 1, दिस डिसोसिएटिव डाइएटोमिक। अगर नॉन डिसोसिएटिव होगा तो इक्वेशन नंबर 1 यूज करना है, बट अगर डिसोसिएटिव होगा जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड देन एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये हाफ हो जाता है। सिमिलरली इफ यू कैन टेक ट्राई एटोमिक, देन क्या होता है, रिमेंबर के पी एवरीथिंग वी हैव डिस्कस 1 प्लस के पी 1/3, and this is also for your dissociative triatomic molecule. Then you can use this equation number 3. ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ओके ओके, इसके बाद हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? देखो काफी सारे फॉर्मूला है। ओके 24, उसके बाद आएगा 25। लेट्स से अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर रेफ्रिजरेटर, राइट, एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर कार्नट इंजन, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो व्हाट इज योर एफिशिएंसी, remember efficiency of refrigerator, you can write down eta ref. This formula is basically your, you know the value, temperature for cold part, sink and source, right, and this is the hot means the source, refrigerator, no T, and then you have a cold, T cold by T hot minus T cold, that will give you the efficiency of refrigerator. बट अगर कार्नट इंजन से क्वेश्चन पूछा गया, अगर क्वेश्चन कार्नट इंजन से पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। सो इन बैकअप माइंड में ये भी याद रखना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर योर कार्नट इंजन लेट्स से यू हैव ईटा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर एफिशिएंसी, ईटा मीन्स द एफिशिएंसी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी कार्नट, सी आर मीन्स कार्नट, that will be your TH. TH means your higher temperature minus C. TC is the lower temperature by TH, or you can write it in the form of heat, QH minus QC by you have this QH. Okay, and also this TC is basically your temperature for the cold part, reservoir temperature for cold reservoir, and TH is basically your temperature for hot reservoir, ठीक है, इसको भी याद रखना। There is a very important equation, यहाँ से तो हमेशा पूछा जाता है, you have this A plus B, if you can prepare some activated complex, you know, whenever I'm talking about activated things, you have this AB star, that will convert to your product, you know this kind of equation, right, काफी टाइम पूछा जाता है ऐसा equation. Let's say this is a K2 rate constant. Now if you want to calculate the, you know, change of enthalpy for the activated complex, if you want to calculate the enthalpy, change of enthalpy for your activated complex, this AB, you know, this part, then you can have this equation in your mind. Make sure that you should remember delta H, this activated complex का जो change of enthalpy होगा, that will be the activation energy plus del Ng minus 1 RT. This is really important equation, remember. Now ये जो del Ng है ना, this is the this will be your minus 1 for the bimolecular reaction. Molecular reaction, why bimolecular reaction के लिए क्यों होगा?
बिकॉज देखो यहाँ पे ऐसे करके समझते हैं ना बहुत इजी तरीके से, बाई मॉलिकुलर मीन्स दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे तो बाई मॉलिकुलर है, ए बी विल गिव यू ए बी यू नो दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाउ ए बी में एक एक दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक एक है ना, ऐसे करके समझ लें, वन वन एंड यहाँ पे एक, तो डेल एन जी मतलब ये वन माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पे नेगेटिव वन ही तो आएगा। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई बाई मॉलिकुलर के केस में दैट वैल्यू विल बी माइनस वन, बट जब हम लोग मोनो एटॉमिक करेंगे, इफ यू हैव ए मोनो एटॉमिक, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाता है। फॉर यूनिमॉलिकुलर, दैट इज द राइट टर्म, यूनिमॉलिकुलर, मोनोमॉलिकुलर हम लोग नहीं बोलते, राइट, यूनिमॉलिकुलर। तो इस चीज को भी याद रखना, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू नो द एक्टिवेशन एनर्जी R and T तो टेम्परेचर सब मेंशन किया जाता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन। कोई दिक्कत है? ओके, मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ और क्या क्या है फॉर्मूला। ठीक है, आई होप everyone can remember this simple equation, this delta G by delta P, sorry not delta, dg by dp at constant temperature, that will give your volume, right? dg by dt at constant pressure, that will give you minus s. du by dv at constant s, that will give you minus p. You know, if you can you remember the zero order reaction, the simplest one that I skip? For zero order reaction, A0 minus A, that will be your KT, but A0 is basically your A, and write down A in the form of A, initial concentration, and this AT, A0 minus AT, this AT, that is basically your, at time T, the concentration of that substrate reactant is basically A minus X. That is the zero order. 9 और क्या क्या हो सकता है? देखो इक्वेशन काफी सारे हैं, सेलेक्टिव में करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में सब कुछ संभव नहीं है, असंभव है, राइट? Okay, so if you want to calculate the population ratio between ground and upper, we have discussed in statistical thermodynamics, N2 by N1, number of particle in upper state, N2 is basically number of particle upper state, and then number of particle in N1 can be your ground state, or you can write on N0, not a big deal. Okay, so let's say this is your ground state. So that will give you your degeneracy G2 by G1 into e to the power the change of energy by K. Whenever you are using K is the Boltzmann constant. K for the molecular concept. जब भी हम लोग delta E by R करेंगे ना, this is the molecular concept. You have to remember this part. Molecular concept. Now, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है ना, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है where you have a G2 by G1 into e to the power minus delta E by RT, अगर ऐसा कोई R है ना, इसका मतलब ये मोलर कंसेप्ट है. You know this R is basically Avogadro number into Boltzmann constant, right? क्लियर हो गया? तो इसलिए ना इसका देखो यूनिट भी सेम ही होता है. R का यूनिट क्या होता है? जैसे जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, राइट? बट ये राइट साइड में देखो ये Na एवोगाड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है? 6.023 into 23, बट इसके यूनिट है मोल इनवर्स. एंड Kb का यूनिट क्या है? जूल, केल्विन इनवर्स. तो देखो मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा. ओके, तो R बेसिकली मोलर कंसेप्ट and Kb is basically molecular concept. Okay, there is another formula. हम लोग 30 फॉर्मूला इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद और डिस्कस नहीं करेंगे. The third formula, sorry, 30 number formula, that will be the vibration rotation spectra का जो एनर्जी होगा, combined energy, vibrational
and vibrational and rotational स्पेक्ट्रा का जो एनर्जी होगा, स्पेक्ट्रा का जो एनर्जी स्पेक्ट्रा, आई डोंट नो, आई शुड राइट लाइक दिस वे, ऐसे नहीं लिखना चाहिए. For vibration versus spectra, what is the total energy? V is the vibration, J for the rotation. ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे डाल सकते हो कॉमा, ठीक है. You can write down whatever you want. So you know, in the left side you can write on E, you can write on different way, you can write on F, whatever way. But the right side में जो लिख रहे हो उसमें सही से लिखना है, यूनिट जो होता है वो सेमी इनवर्स में लिखना है. तो दिस वैल्यू, okay, we are not talking about your vibration rotation spectra, we are talking about vibration Raman spectra. रोटेशन नहीं लिखना है, वो बाद में नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, ठीक है. वाइब्रेशन रामन स्पेक्ट्रा, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. दैट इज बेसिकली योर V प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर omega e x e. And what is the unit? Semi inverse. Because now if you have a transition from V0 to V1, तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा दैट विल बी योर फंडामेंटल. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. दिस फंडामेंटल वैल्यू विल बी योर ओमेगा ई माइनस 1 माइनस 2xe. फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है. x इज बेसिकली एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, राइट. दिस x इज बेसिकली एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट. अगर ये ट्रांजिशन हम लोग V0 टू V2 करेंगे दैट विल बी फर्स्ट ओवरटर्न, V0 टू V3 दैट विल सेकंड ओवरटर्न, राइट. तो वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ओवरटर्न, इसके बाद और नहीं करते, ठीक है. ओवरटर्न जैसे फास्ट ओवरटर्न ही बहुत वीक होता है इसका वैल्यू, एंड दैट विल गिव यू 2 ओमेगा ई 1 minus 3xe. but if you do this transition from V1 to V2 that will give you hot band, ठीक है. सो अप टू इस लेवल तक हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड बाकी जो भी क्लास होगा यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है. आई होप सबको समझ में आया है वट एवर वी हैव डिस्कस. थैंक यू वेरी मच.